ग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के गीता के इस प्रवचन में। We welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. We are studying chapter 4, verse 38. 37वां 38वां 37 तो हो गया ना। ज्ञानाग्नि वाला तो हो गया था ना। तो यहाँ भगवान ज्ञान की महिमा बता रहे हैं और ये ज्ञान मार्ग का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये कर्मयोग से उपलब्ध ज्ञान है। तो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था यथै धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा जिस प्रकार से ईंधन को अग्नि जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि So कर्म का सर्वनाश, सब कर्मों का
The fire of knowledge destroys all the karma. कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है. The person becomes free from तो bondage to karma. उसी ज्ञान की महिमा बताते हुए यहाँ फिर So Bhagavan is glorifying that अंतिम jnana, परिणाम क्या and है. here he is telling what is the final result. कहते हैं इस श्लोक में न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति. इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने Translation: वाली in अनेक this चीजें world, तो नहीं है. there is nothing at all as इसने जिस purifying as योग wisdom. योग से To पूर्ण one fully सिद्धि perfected प्राप्त की through है, Nishkam उसे Karma Yoga, समय आने पर that सिद्ध भी wisdom is होगा. revealed to the self of its own accord in due course of time. तो यहाँ So ज्ञान here की पवित्रता के बारे में कहा है. इस श्लोक में Bhagavan is भगवान ने speaking about the purity of ज्ञान की तुलना knowledge. अग्नि से की In थी. the previous verse, he had अग्नि को पवित्र माना जाता compared है. knowledge with fire. अग्नि Fire is यहाँ considered pure. Fire, को पवित्र kushagras, माना जाता है. they are considered pure. और हम अपने प्रयोग में भी देख सकते हैं कि कोई भी And घड़ा ले लो, उसको we पानी can में डाल दो तो उसकी see गंदगी in our experience also, if तेज you धुआं put any निकलेगा. object in fire, कोई बर्तन its पानी में डाल दो impurity तो gets शुद्ध burnt. हो जाएगा. If you put any vessel in fire, लेकिन it अग्नि becomes से भी pure. ज्यादा But पवित्र करने वाली more एक purifying वस्तु जो than है वो fire ज्ञान है. is knowledge, क्योंकि अग्नि तो भौतिक रूप से because ही शुद्ध करता है, fire purifies लेकिन only ज्ञान at a जो है material level, हमारे but आत्मा की knowledge शुद्धि करता है, आंतरिक शुद्धि purifies करता है. us, our chitta, purifies us internally. संसार में शुद्ध करने वाली अनेक चीजें हैं. जल को भी In शुद्ध this world, there are करने many वाली things that purify. When water व्यवस्थाएं is a करते हैं. purifying agent, we take कपड़े bath धोने with के उपाय water, होते हैं, we wash clothes with water, we wash शरीर की vessels with व्यवस्था water. है. If we have to purify anything, we use तो ये तो water. बाह्य शुद्धि है. So this is external purification. आंतरिक शुद्धि के लिए Internal, अनेक उपाय शास्त्रों में for बताए हैं. internal purification, many जैसे व्रत things करो, are told in Shastra, उपवास करो, like doing vrata, यज्ञ करो, दान fasting, दो, yajna, तीर्थ का charity, स्नान करो, taking bath in place of pilgrimage, भोजन कराइए दूसरों को, गरीबों को वस्त्र दान कीजिए. giving तो free इस food, प्रकार के अनेक clothes to poor कार्य people. शास्त्रों में बताए हैं जो In this way, there are many पाप को activities काटते हैं. prescribed in पाप ही Shastra. शुद्धि है They और cut इनको off शुद्ध our करते हैं. sins, because लेकिन ये sins जितने भी are impurities. उपाय हैं, So these शुद्धि के, activities they purify us. But ये all these activities पाप which को तो purify काट us, देंगे, they लेकिन पाप का जो can कारण है destroy the sin, जिसके कारण व्यक्ति but पाप करता है, the root cause of the जिसके sin for कारण which हमारे मन human में being पवित्रता performs the आती है, sin, due उसको to which मिटाते हैं. we get impurity. So these उसी प्रकार activities से है जैसे cannot आप घास remove the लगाते root हैं. cause. It is आप like किसी suppose you अपने घर के cut आसपास में grass घास लगाते हैं near some people तो they sow उसको grass हफ्ते in 10 दिन में near काटना their पड़ता है. home. So every काट week के or 10 days रोज they have to cut it off. But उसको if you साफ cut करते it, रहना पड़ता है. then it grows again. So you have to do it regularly. तो इसी प्रकार से जो So in this अन्य way, उपाय हैं the उनको आप other कीजिए, methods उनसे आपकी शुद्धि होगी, you अवश्य ही can होगी. ऐसी नहीं है कि नहीं होगी, you लेकिन can apply that. उसकी ये कोई It will purify you. It is not that it won't नहीं purify है you, कि but there is no आप guarantee दोबारा से अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, that you will अशुद्ध not नहीं make करेंगे. yourself impure again, or you will not भ्रष्टाचार, perform sinful activities again, or you will not engage in corruption इसका again. इसके कोई There निश्चित is no guarantee that you will और उसका not कारण repeat क्या है that कि sinful इसका मूल activity. कारण जो है, जो And what इन is सब the बंधनों reason? का, The root cause of all these अपवित्रता sins, का जो these मूल कारण defects, है these वो है अज्ञान. impurities is Agyan, जब तक हमारे ignorance. अंदर अज्ञान रहेगा, As long as we have तब तक ignorance, हमारे अंदर गलत कार्य करने की संभावना बनी रहेगी. till then there will be तो हम possibility कोई कह सकता for है us कि to ज्ञान तो do बहुत लोगों wrong के पास होता activity. है, Now somebody may say कोई that बहुत many बड़े people have गणित में Jnana, विद्वान है, knowledge. कोई ज्योतिष का Somebody is विद्वान है, expert in कोई mathematics, फिजिक्स somebody in केमिस्ट्री Jyotish, गणित somebody in गणित में physics, विद्वान है. chemistry, computer. तो क्या वो पवित्र हो जाते हैं उस ज्ञान से? So do they उनके पास भी तो वो भी get तो ज्ञान purified कहलाते by हैं. that उनके पास knowledge? जाते हैं, उनको पैसा भी दे के They are उनसे also सलाह called लेते हैं, Gyanis, knowledgeable people. People उनसे pay them पूछ लेते money हैं ना. and वो ज्ञानी है तभी तो उनके take पास जाते हैं. consultation. So they are तो क्या knowledgeable. That's why वो people ज्ञान approach उनको them. पवित्र करता है? So does that knowledge purify them? तो यहाँ
उस ज्ञान की बात नहीं हो रही, वो So भौतिक ज्ञान here है, we are not talking of प्राकृतिक that ज्ञान है, प्रकृति knowledge. संबंधी ज्ञान है। It तो is उस just ज्ञान से material knowledge. ये आंतरिक पवित्रता नहीं आती है, That knowledge does not lead to तो उसको internal purification. अपरा ज्ञान बोलते हैं, अपरा विद्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जिस ज्ञान की That is बात हो apara रही है jnana वो or apara अपरा विद्या vidya. है, Here what we are talking ये about is आध्यात्मिक para ज्ञान है। vidya. This is spiritual knowledge. क्योंकि हमारी जो मूल समस्या है वो Because our main आत्म problem संबंधी अज्ञान के is कारण है, our own ignorance और related to our own हमको self, अपने आप को, related to अपने Atma. आत्मा का, We स्वयं का ज्ञान उपलब्ध नहीं है। do not have knowledge of तो इसलिए ourselves, the Atma. हम That is why अपनी पहचान इस शरीर से बनाते हैं, we identify और ourselves with this उसके body. कारण फिर राग द्वेष, Due to that, then अभिनिवेश, there is raga, dvesh, ऐसे attachment, संस्कार aversion, जो abhinivesh, and then संबंध all है, kinds of other wrong ये activities. पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये So then अच्छा there are लगता है, ये अच्छा dualities. नहीं We like लगता, this, we don't like ये that. मेरा शत्रु है, ये मेरा This मित्र is है। enemy, this is friend. तो ये सब प्रकार के द्वंद्व जो हैं वो उसी के All कारण these पैदा होते हैं। dualities are due to that only. तो इसलिए जब तक उस अज्ञान को विदूरित नहीं किया So जाएगा, unless तब तक ये we दोष हमारे अंदर get बने rid of रहेंगे। that ajnana or ignorance, these defects will तो remain. इसलिए उसका जो मूल है That is उसका why कुठाराघात करना है। सब दोषों we का have मूल to हमारे attack अंदर है, the root जब तक itself. उस पर कुठाराघात नहीं होगा, जब तक उसको नहीं काटा जाएगा, Unless we तब uproot तक ये समस्याएं the बनी root cause रहेंगी। of this problem, तो आप till then these problems will remain. इंतजाम करते rहिए, दान So दीजिए, you can यज्ञ try, कीजिए, keep trying something और else, प्रायश्चित giving कीजिए, charity, उपवास etc., कीजिए, व्रत रखिए। doing इन prayaschitta, सब से आपकी fasting, शुद्धि होगी, लेकिन वो जो different vratas. आंतरिक So they will शुद्धि purify you, का जो but मूल कारण है the वो main आपको प्राप्त नहीं cause होगा। of the internal purification, we तो will उसी के not लिए get that. भगवान यहाँ कहते हैं कि ये जो For ज्ञान that है only Bhagavan is telling here that ये this इससे jnana, पवित्र करने this वाला और knowledge, कोई there is nothing as purifying वस्तु नहीं है। as this. और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो ये And कर्म how योग से we will get this कर्म को knowledge? पवित्र करने That के will be द्वारा। by कर्म Karma योगे Yoga. संसिद्धि मास्तिता जनकादय, पिछले अध्याय में भी भगवान ने कहा था In the कि previous जनक chapter आदि also, Bhagavan had said कर्म से ही that सिद्धि को प्राप्त किया। Janaka, etc., they also achieved तो perfection by karma उसी only. को यहाँ पर बताते हैं So he is telling about कि that ये only. योग संसिद्ध, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो व्यक्ति जो है वो स्वयं ही इसको So प्राप्त human करेगा। being will get it himself only. तो योग संसिद्ध का मतलब यहाँ योग शब्द से Yoga अष्टांग Samsiddha योग means नहीं है, here yoga does not refer to Ashtanga Yoga. यहाँ योग शब्द का अर्थ कर्म योग का Here ही है, yoga refers to Karma Yoga only. क्योंकि कर्म योग का ही प्रकरण Because चल रहा है। the context तो जैसे is पहले of कहा Karma Yoga कि only. सर्वम So like खलु Bhagavan said earlier, ज्ञाने परिसमाप्यते। तो जो तीन ज्ञान प्राप्त करने के या मोक्ष प्राप्त करने के जो तीन मुख्य मार्ग भगवान ने बताए so हैं, the three कर्म main योग, ज्ञान योग, paths भक्ति योग, that Bhagavan तो prescribed, like उसमें से Karma यहाँ Yoga, कर्म Jnana योग Yoga, की Bhakti बात Yoga. चल रही है। So here तो he is योग talking शब्द का about प्रयोग Karma भगवान Yoga, ने and दूसरे अध्याय में भी कर्म योग के Yoga लिए ही किया है। word ऐसा was कर्म used in the second कर्म chapter also for योगी Karma Yoga only. तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ जो योग शब्द है वो So कर्म here योग we के have लिए to है। understand that yoga तो refers कर्म to योग से सिद्धि Karma की Yoga प्राप्ति only. होती है, तो उसकी So सिद्धि क्या Karma है? Yoga उससे ज्ञान brings प्राप्त होगा। Siddhi or तो perfection. जब What is तक the ज्ञान प्राप्त नहीं perfection? होगा तब तक That we समस्या get दूर Gyan, नहीं रहेगी। knowledge. अज्ञान के कारण ये Because सब unless we समस्याएं get आती this हैं। knowledge, all problems will be there due to यहाँ पे एक ignorance. बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था सुकरात, सोक्रेटिस, उसका नाम आपने सुना होगा। Socrates was उसने एक a बहुत great महत्वपूर्ण वाक्य दिया philosopher. So जिसमें वो कहते he हैं कि ज्ञान ही made a विवेक है, very जैसे great श्रीकृष्ण ने कहा। statement. He says knowledge is तो उनका virtue. ये बहुत बड़ा सिद्धांत था जिसको बार So बार he दोहराते रहते थे। उनका had कहना this था कि great जिस philosophy. He व्यक्ति को always ज्ञान repeated होगा this, that knowledge वो is उसमें virtue. अवगुण नहीं रह He said सकता। that one who has knowledge, he cannot जिसको ज्ञान have होगा वो गलत bad काम करना ही quality. नहीं कर सकता। One who has knowledge, he cannot perform wrong activity. ये उनका सिद्धांत था। This was तो his उनकी बात सही है, philosophy.
So गीता his में भी भगवान statement इसी is बात को correct. बोल रहे हैं And कि here in ज्ञान Gita जो है, also Bhagavan is जैसा मैंने कहा, ये भौतिक ज्ञान नहीं है, repeat is आध्यात्मिक also ज्ञान telling है। that. But as I और said, वो the आध्यात्मिक knowledge that ज्ञान Bhagavan is talking भौतिक about here ज्ञान is नहीं है। spiritual knowledge, not material knowledge. And हमको also not just theoretical spiritual knowledge, but जैसे experiential spiritual knowledge. कोई आपसे कहे कि So, like मुझसे 5 suppose मिनट की somebody ज्योत tells लगाना, तो you आप जल जाओगे, उसको अनुभव नहीं or है, tells a child that समझ don't लीजिए। touch लेकिन जब you उसका this हाथ लग fire, जाएगा आग में you'll get burnt. और आग उसको But जलाएगी, he puts तो finger in फिर that and he उसको gets कहने की burnt. जरूरत नहीं Then पड़ेगी। after that you don't have to tell उसके him. बाद वो कभी Then जानकर तो कभी intentionally he will उसमें हाथ नहीं never डालेगा। put the hand in गलती fire. से हो जाए वो बात अलग है, By mistake it may वो जानके happen, नहीं that's करता। a different point. तो But इसीलिए intentionally he will not do that. हमको ज्ञान है कि हमको सत्य बोलना चाहिए, So we have ये knowledge सब जानना that we चाहिए, should लेकिन ये speak the केवल truth. भौतिक ज्ञान है। But this is जब just हमको वास्तव में ये समझ theoretical में आ जाएगा कि knowledge. सत्य बोलने When से we will हमें understand लाभ होता है, actually that असत्य बोलने से we हमारी get हानि होती है, benefited दुख by उठाना पड़ता है। speaking the truth and केवल मैं we अग्नि suffer से बोल रहा loss हूँ by speaking lie. तो मैं सुरक्षित Similarly, हूँ, और अग्नि में मैं अगर हाथ लगाऊं if we तो understand मुझे that कष्ट होगा। by putting hand in the तो fire इसी we will प्रकार get जब burnt. हमको ज्ञान हो जाएगा कि असत्य बोलने से वास्तव में So when we'll get मेरे the को knowledge कष्ट के that कारण हो रहा है, actually by speaking lie I am अग्नि के संबंध sowing में तो seeds उसका of फल आपको misery तुरंत only. दिखाई देता है, In case of fire, you see the इसलिए आप result समझ जाइए immediately, so you कि understand. असत्य बोलना But या किसी को speaking धोखा देना lie or cheating या दुराचार करना, or जब से engaging in हमको बुद्धि नहीं corruption, आता है you तो don't इसलिए get हम the मानते हैं result कि नहीं, इससे तो हमको immediately. लाभ हो रहा है। So we think सामने that वाले no, को this is lie लाभ is दिखाई speaking दे lie रहा is है, benefiting me. इसलिए हम उसको करते हैं। So temporarily you लेकिन may बाद में feel the अगर हमको benefit. हानि दिखाई That's why दे you do that. तो हम नहीं But करेंगे। temporarily, immediately, if you get some feel some इसीलिए loss, लोग then you will not do सिगरेट that. पीते हैं, शराब So पीते that's हैं, why people smoke अपना स्वास्थ्य cigarette, खराब they करते हैं, drink क्योंकि उनको wine, तात्कालिक कुछ लाभ they दिखाई देता है उससे, spoil their health और जो because हानि होती है वो तुरंत समझ में immediately आती है। they feel some benefit, तो ज्ञान but का the मतलब है loss कि happens ये over a वास्तविक period में of ज्ञान time. होना। तो जिसको So ये here ज्ञान हो jnana means जाएगा having वो actually this वो realization, ना this सिगरेट knowledge. पिएगा ना शराब पिएगा, One छोड़ने who की भी has जरूरत that, नहीं पड़ेगी। he will not smoke cigarette, he will not drink wine. तो क्योंकि वो ज्ञान जो है So उसके this संदेह jnana को, or संशय को knowledge, निवृत्त कर देगा। this jnana, it will जब हमारे अंदर remove ज्ञान his होता doubt. है, When we और have अज्ञान भी कई प्रकार का ignorance, है। अज्ञान and में agyan or ignorance also ज्ञान है has two नहीं इस meanings. विषय में, One is that और we do दूसरा not है have कि knowledge वो about गलत ज्ञान something, है, उसको and हम other गलत is that समझते हैं। we have wrong knowledge. तो वास्तव में जब हम अज्ञान That को is दूर also called करने का agyan. ट्राई So करते हैं actually, when we talk about agyan, गलत it ज्ञान, generally means having the wrong अज्ञान knowledge. होने के And कारण जो है मैं wrong गलत knowledge, निर्णय लेता हूँ फिर, due to wrong knowledge, I take wrong और decision, उसका फिर मेरे को and कष्ट then उठाना I पड़ता है। have to लेकिन suffer जब मेरे को due to सही having ज्ञान taken मिल wrong जाएगा, decision. But when I will जब मेरे have को ये the बात right समझ में आ knowledge जाएगी and I कि will वास्तव में understand मैं that आत्मा हूँ, actually I am मैं Atma, शरीर से भिन्न हूँ, I am different from the body, और and शरीर एक अनित्य वस्तु मेरे को body is a एक temporary कपड़े object के तरह मिली which हुई है, I have received like और हम a इसका लाभ cloth उठा or सकते हैं, garment, और and I can take कर्म advantage करने of से it. कर्म का फल मिलता है, And by doing उसका karma, I लाभ get the उठाने का result फल of मिलता है। karma. तो ये ज्ञान जब मेरे को हो जाएगा, वास्तविकता में When इसका I will अनुभव have हो this जाएगा, तो correct फिर मैं गलत knowledge, कार्य करूँगा नहीं, मैं फिर then I will not मेरे को engage in wrong कर्तव्य की, activity. भोक्तृत्व की भावना नहीं आएगी, Then I will not have the feeling of और doership and मेरे enjoyership. पास में जो परिस्थितियाँ पैदा होंगी And उसमें the मेरा मन विचलित situations नहीं होगा। that I will face, तो they will not पवित्र disturb का my मतलब mind. यहाँ पर यही है। So, telling पवित्र purifying, शब्द जो है purification पवि means और this त्रा, only here. दो चीजों से बना है। Pavitra is made with pavi and पवि tra. कहते हैं वज्र को, Pavi जो refers to दिव्य Vajra, अस्त्र है the उसको weapon of वज्र कहते हैं, Indra that is called Vajra. वो बहुत शक्तिशाली है। It is very powerful. और त्रा माने जो रक्षा करता है। And Tra means that protects. तो यहाँ पवि वज्र का So मतलब है here, कर्म रूपी वज्र, Pavi or Vajra, it refers पाप to रूपी वज्र। karma or तो papa, sin. पवे त्रायते इति पवित्र, जो इस पाप रूपी वज्र से हमारी रक्षा करता है, That पवित्र है which वो ज्ञानी। protects us from ज्ञानी this में सदृशम पवित्र। Vajra like sin. और दूसरा यहाँ सदृश, सदृश का मतलब होता है समान,
Another here is वास्तव में point हो is सकता है ना, sadrisha, which मतलब means दूसरा भी like, होता है। दृष्टि saman. मतलब दृष्टि, आंखें। But drish also ज्ञान की means आंखें होती drishti हैं। or eyes, like having eyes of तो ज्ञान knowledge. पवित्र करता है, So ज्ञान knowledge आपको purifies दृष्टि us, देता है। and दृष्टि मतलब knowledge क्या? gives us vision also. नहीं तो आप किसी चीज को देखते हैं, आपको Jnana gives दृश्यम us ज्ञान मिलता drishti होगा, or तो पता vision. चलेगा कि क्या है। आपके सामने कंप्यूटर या आपका सेल फोन रखा हुआ है, आपको ज्ञान है कि ये क्या वस्तु है, तो उसका आप उपयोग करते हैं, लेकिन So if you have a cell phone or ये computer, we पहचान use नहीं, that. पहचान ही But नहीं if we सकते। have never seen that, we don't know about it, you can keep seeing it. तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में चलते हैं, In this लेकिन अगर way, हमको ज्ञान नहीं we होगा तो move ahead in हमारे life. उसमें दृष्टि But नहीं if we do रहेगी। not have knowledge, then actually we इसलिए do not ज्ञान को have अंधकार vision. कहा We जाता are blind. That's why है, और ज्ञान है ajnana or रोशनी। ignorance is known as तो darkness. सदृशम का And मतलब ये है Gyan कि gives light. जो है उसके, वो हमको एक दृष्टि So Sadrisham here प्रदान means that करता है Jnana or knowledge gives और us a vision, हमारी रक्षा eyes, करता है। and it protects us. क्योंकि रक्षा कैसे करता है? How हम does कोई it गलत protect कार्य us? करेंगे ही नहीं, We will now, हम because इसलिए भी now we will not engage in wrong तैयारी कर activity. रहे कि अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो मेरे को सरकार जो है वो दोषी ठहराएगी, जेल भेजेगी या पुलिस पकड़ेगी। इस तरह से नहीं, मैं अंदर से ही गलत It कार्य is करूंगा। not that I am not doing wrong हमको पता activity है out of कि fear of इसमें getting caught. नुकसान But होगा, actually, internally, I don't want to do the wrong तो activity. ये ज्ञान का I मतलब know है। it is not good for me. लेकिन So this is what Jnana means. कर्मयोग करने से सिद्धि जो है वो तुरंत नहीं हो But जाती the है, siddhi or perfection that we get उसको by समय karma लगता yoga है। is not immediate. तो इसलिए It takes time. कालेन आत्मनि विन्दति। तो समय क्यों लगता है? क्योंकि So why हमारी does it take जो time? आसक्तियां रहती हैं उनको That छोड़ना is because we have attachments. एकदम We से have होता to नहीं give them up, and we are not able to give them up है। ये बात समझ में immediately. आना कि कर्म का फल Now, मेरे को भोगना getting पड़ता this है, point, understanding इसलिए मेरे that को I गलत have कर्म to नहीं करना पड़ता suffer है, the result of सुनने के karma, बाद भी so I हमको should कर्म not ठीक से do the करना wrong नहीं है। activity. Even after hearing, it does लेकिन not अगर fit हम in our mind कर्मयोग के सिद्धांतों properly. का पालन करते But हैं if we actually तो धीरे 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 follow धीरे the siddhantas of सिद्धि karma होती yoga, है। then और slowly हमारी we will जितनी become सिद्धि होगी purified. उतनी हम आध्यात्मिक चीज़ों को And समझने लगते हैं। as we become purified, जितना we हमारा हृदय start शुद्ध होता है understanding the spiritual उतना ही subject. हमको आध्यात्मिक चीज़ें देर से The समझ में more आती our हैं। heart gets purified, the तो ये हमारे more अंतकरण को it शुद्ध take the करता more है। time it takes. और अंतकरण का शुद्धि का मतलब क्या है? कि हमारी आसक्तियों को मिटाता है। Purification इसलिए of the यज्ञ chitta वगैरह means कर्म our करते asaktis हैं, go away. कुछ So सेवा doing करते this हैं, yajna, charity, तो इससे क्या seva, होता है कि हमारी आसक्ति कम होती है, so what happens is that हमारे अंदर our एक भाव attachment आता है कि ये सब reduces. कुछ मेरे लिए ही We है, get this bhava मैं that दूसरों के लिए भी करूं, everything is इसलिए not जो for श्राद्ध me. का समय I चल should रहा do है something for others also. तो Like currently इसलिए this मैं पिंडदान Shraddha करूंगा। time is going on, तो so इससे I हमारे should अंदर do में Pindadan कुछ for the आसक्ति घटती ancestors. है So it reduces our और attachment हमारा हृदय थोड़ा खुलता है। and our अज्ञान heart के कारण, आसक्ति opens के up कारण हमारा slightly. हृदय Due to संकुचित हो जाता है। ignorance, due to attachments, our heart तो becomes वो constricted. खुलता है तो फिर So when उसको it हम opens जानते up, हैं कि उसमें then क्षमता है। then it becomes capable enough ये बात to हमको फिर समझ में आती है receive the कि knowledge. मैं नित्य हूँ, We आत्मा नित्य है, understand मेरा that जन्म we are मरना नहीं है, eternal, मृत्यु नहीं होती है, we are not और born, शरीर we don't temporary है, die, इसलिए हमारा and संबंध body जो is है वो temporary. वास्तव में है नहीं, So we actually do not have the ये एक relation. माना हुआ संबंध है। It is just something that we जितने have संबंध हैं assumed. संसार में वो All बने the हुए हैं। relations in the world, they have ये just है assumed them. कि आपके पिता You हैं, have been आपको told पता that चलता है, he is your father. How do you know? आप मान ही रहे हैं ना। You have just accepted that. तो उसी प्रकार से So संबंध in माने the हुए same हैं, way, the relations, बनाए हुए हैं। these relations are all assumed. They are all जब temporary. शरीर ही अनित्य है तो So शरीर से when हम body itself क्रियाएं is करेंगे temporary, then तो all the अनित्य होंगे, activities that we do with उनका body, फल भी अनित्य they are होगा। all temporary only, तो and they अनित्य का will give मतलब temporary जो results फल only. नहीं है वो बचेगा नहीं, तो फिर And किस लिए मेहनत temporary करूं? means it won't survive. So why am I working तो hard for ऐसी that? वस्तु के लिए मेहनत क्यों नहीं करते हैं जो टिकाऊ है, Why not work hard for something क्योंकि that हम तो is नित्य हैं। eternal? Because we are eternal. तो ये ज्ञान जब हो जाएगा, जब हम इस So when कर्मयोग we के get ज्ञान this को समझ knowledge, जाएंगे when we understand तो this इससे हमारी फिर science of सिद्धि karma, होगी। यही कर्मयोग, ये जो योग that will give शास्त्र us है perfection. यही सिद्धि है। इससे फिर
हमारे अंदर इस बात की अनुभूति, यह बात हमारे अनुभव में आने लगेगी, then we will start experiencing और this. उसके लिए समय लगता है, इसलिए कहा And that कालेन। time, और ये ज्ञान जो है ये आपके अंदर प्रकट होगा फिर। then you will get this knowledge. This knowledge ये will ज्ञान तो अंदर है ही, कोई ज्ञान कोई awaken. ऐसा नहीं है This कि knowledge is there हमको बाहर inside. से It इसको is देना not है। that मैं आत्मा we हूँ, have to इसलिए get मैं it from outside. I am बाहर Atma. से I कुछ am नहीं not है। this body. This will not come from outside. तो मैं हूँ, मेरी सत्ता है, So I am, I मैं शरीर से exist, भिन्न हूँ। and I am इसको different बाहर से from the देने से body. ठूसा नहीं जाएगा, तो वास्तविकता So है, इसको this बाहर से नहीं knowledge लाना does not have to है। be इस imposed from outside. इसमें This is the अज्ञान के reality. कारण मैं इसको समझ Due नहीं to हूँ। ignorance, I am not इसलिए कहते understanding हैं कि this. आत्मनि विन्दति, कि आत्मा में, मेरे आत्मा का अर्थ अंतकरण कीजिए या अपनी आत्मा ही कीजिए, दोनों तरह से ही समझ सकते हैं। तो वो मेरे को समझ आ जाएगी कि मैं So I will आत्मा हूँ। understand that I am Atma, और जब ये समझ आ जाएगी, and when I will understand this, मैं then कोई भी सकाम कर्म नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँगा? I will not do any sakama karma. लगेगा कि ये सब मेरे बाहरी वाली चीज़ें हैं। और स्वयं, उन्होंने कहा तत्स्वयं, तत् माने ज्ञान, जो ऊपर ज्ञान है उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग किया। स्वयं माने So for अपने आप। jnana, that word is कहने used. का अर्थ है कि Swayam ये means on ज्ञान his जो है own. ये उपदेश वाला ज्ञान नहीं है। The point is that this jnana जो is पहले not that भगवान of ने कहा था कि upadesh. तद्विद्धि प्रणिपातेन Like Bhagavan परिपालयन् told earlier, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, कि आप ऐसे ज्ञानी के पास जाइए, so he said that you go to such a उसमें थोड़ी सी jnani, सेवा कीजिए, you तो pay वो obeisances आपको to him, उपदेश you ask देगा। questions and do तो वो एक seva, अलग he will विधि है, instruct you in knowledge. So उपदेश that देने is की। a different और ये method जो of विधि giving है upadesh, ये उपदेश वाली instruction. नहीं है। But what here ये Bhagavan जो is saying, योग that is सिद्धि not है, of instruction, जो शिक्षा that is पूर्व by भगवान ने अभी yoga, कही कि कर्मणा एव what ही he said सिद्धिः, earlier, कर्म से ही सिद्धि होगी। that you will get siddhi by karma ये only. कर्तव्य कर्म करने से, कर्म योग By का for पालन doing करने से this ही duty, ये ज्ञान karma yoga, स्वतः सिद्ध होगा। this gyan, ये you will विधि get बड़ी it. समझने वाली है। इसी के लिए You will भगवान ने perfect in कहा it. था सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। That's why Bhagavan had कर्म said की परिसमाप्ति है, यानी कि उसका जो फल होगा वो ज्ञान में that होगा। the result of the karma will किसी be in उपदेश से jnana. नहीं है, So that is not by some instruction, ये स्वयं ही है। that is on its own. तो इस श्लोक का यही अर्थ है। अब इसके This is बाद what this verse फिर means. वो Now, बताते after हैं this, then he says कि ज्ञान प्राप्त करना हो, that if you have to get उपदेशात्मक ज्ञान है, knowledge तो by उसके लिए instruction, पात्रता क्या है? then what is the qualification? तो उसके लिए अगला श्लोक बोलते हैं भगवान। For that, he speaks the next verse. और ये जो अगला श्लोक है इसका संबंध जो And पहले कहा this उन्होंने verse तद्विद्धि is प्रणिपातेन, connected with what he said सर्व earlier, सेव्य, उस Tadvidhi श्लोक से ही इसका Pranipatena. It संबंध is है। connected with that verse. तो इसमें कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु है, जो इस निष्काम कर्म योग की साधना में एक निष्ठ है और जिसकी इंद्रियां One who is पूर्णतया endowed with संयमित faith, हैं, who is singularly वह devoted to this ज्ञान प्राप्त practice of करता है Nishkam Karma, और इस ज्ञान and के whose senses साक्षात्कार are होने fully पर regulated, तत्काल attains परम wisdom. शांति प्राप्त And on होती the है। realization of such wisdom, तो that यहाँ person immediately obtains supreme ज्ञान peace. प्राप्त करने का जो मुख्य गुण उन्होंने बताया, So here, मुख्य योग्यता, the main वो है qualification श्रद्धा। that he says about कहते हैं कि getting jnana श्रद्धावान is लभते Shraddha. ज्ञानम, कि जिसके अंदर श्रद्धा है So he says that one who वही has ज्ञान प्राप्त करता Shraddha, है। only such a person can get jnana क्योंकि or अगर knowledge. आप Only one who has faith, किसी only की he बात can get सुनते हैं, this. किसी का प्रवचन सुनते हैं Because if और उसमें you श्रद्धा listen to नहीं है, somebody's instruction तो and you do not have चाहे उसको faith जो in कहो that कहो कोई person, फर्क नहीं then पड़ता, whatever he is speaking, it कहेंगे will ये not affect you. बक बक करता है। You may just think that तो he is इसलिए simply श्रद्धा blabbering. होना बहुत आवश्यक है। That is why it is essential to और have faith. श्रद्धा का क्या अर्थ है? And what this श्रद्धा faith का means, अर्थ है कि this faith जो means शास्त्र का विषय है
here it refers to having faith in the subject of Shastra or in the words of Guru, in the instruction of Guru. उसका आपको अनुभव नहीं है, This is what Shraddha means. अनुभव हो जाएगा You तो फिर don't have आपकी आवश्यकता experience नहीं of है उसको that, because if सिखाने you की। have experience, then there is no need to instruct. तो उसको इसी प्रकार है कि So it is like कोई माँ अपने छोटे बच्चे को कहती है कि आग पे mother हाथ मत tells लगाओ, a नहीं तो small जलने child लगेगा, कष्ट that होगा। don't तो touch वो fire, मान लेता है, otherwise तो you उसको will भी get आवश्यकता burnt. नहीं है कि हाथ So he just उसमें हाथ accepts what लगाए, mother has said. He लेकिन doesn't उसने have मान लिया एक experience बार of having been कि burnt by हाथ touching लगाने से fire, कष्ट होता but है, he has accepted that तो दूसरे statement बच्चों को भी कह that सकता है कि by आपको हाथ मत touching लगाना, fire, मेरी माँ ने कहा है I'll इसलिए get मैं burned. So कहता he हूँ। can instruct other अभी उसको his अनुभव friends नहीं है, also लेकिन उसमें that विश्वास don't है, touch fire because my mother has said you will get burnt. और अगर So he has विश्वास no नहीं होता experience, जैसा कि but he बच्चों has को होता है, तो faith वो लगा in के mother's statement. बच्चों की But आदत होती है nowadays, कि as अगर we कहो see, कि ये children करना don't है have तो वो faith. जरूर करेंगे, So whatever you tell them not to do, they will definitely वो do that देखना चाहते हैं कि मना क्यों कर रहे because हैं, they want to experience, अनुभव check लेना why चाहते हैं। am I being तो forbidden अपना from एक doing this. अहंकार They also have their ego. बनता है, तो उसको दिखाना चाहते हैं कि मेरा So they also want to स्वतंत्र show है, मैं their ego तुम्हारे कहने से थोड़ी करता हूँ। that I also have my own independence. Why shall I do everything as you say? तो श्रद्धा का मतलब यही होता है। So Shraddha means this only. और श्रद्धा भौतिक विषय में भी हो सकती है, Shraddha आध्यात्मिक विषय can में हो be सकती in है। material subject, यहाँ in पर जिस spiritual श्रद्धा की subject. बात हो रही है Here उसमें the Shraddha that ये नहीं Bhagavan है is कि हम explaining सही is हैं या refers हम नहीं to हैं। spiritual subject because that is the context श्रद्धा here. सभी की That कहीं is ना the कहीं discussion. होती है। Everybody has Shraddha or faith in something or the other. तो जो भी व्यक्ति कुछ So भी करता है, any person, whatever he उसमें कुछ ना does, कुछ श्रद्धा रहती he है, has some faith in that. He has Shraddha उसमें in उसका that. विश्वास रहता है कि मेरे लिए अच्छा है He इसलिए has करता faith हूँ। that this is good for हम me, एक so I am चीज doing करते हैं, this. उसका परिणाम हमको पता नहीं होता, फिर भी हम We करते do हैं, something, but we do not know what will be the result, but विश्वास still होता we है। do that because we have faith तो in that. यहाँ So श्रद्धा की जो here, बात हो रही है वो the आध्यात्मिक श्रद्धा Shraddha की that है। is being इसलिए आध्यात्मिक discussed, श्रद्धा में that is विश्वास, और spiritual, विश्वास के spiritual साथ faith, में थोड़ा आदर रहता है। and भौतिक it is श्रद्धा also में हम accompanied विश्वास with करते हैं तो respect. उसमें हमारी When we आदर have faith बनी in रहती है, material अगर subject, विश्वास there नहीं is है, no respect in that. It is जैसे just आप प्रेयर faith. करते हैं तो आपका If विश्वास you है are working कि somewhere, so you महीने have के अंत faith में that at the end आपको of the मिल month, जाएगा। I will get the ऐसा salary. थोड़ी कि आप उनकी कुछ But that does not भयानक mean दृष्टि से देखते हैं उन्हें। that you see them तो very यहाँ श्रद्धा का respectfully. अर्थ होता है कि हमारी So कुछ here, आदर का भाव Shraddha रहता means है विश्वास के साथ। having this feeling of faith और with respect. ये श्रद्धा And this भौतिक Shraddha आध्यात्मिक दोनों प्रकार की होती है। भौतिक के भी is 3 of विभाग हैं, both material and spiritual types. सात्विक श्रद्धा, Material has राजसिक again श्रद्धा, three तामसिक divisions: श्रद्धा। Sattvic, Rajasic, and Tamasic Shraddha. तो इसके अनेक विभाग हैं। और फिर So it आध्यात्मिक has श्रद्धा many इसको divisions, भी and और then there बढ़ाया जा is सकता है। spiritual तात्विक Shraddha श्रद्धा that से also भाव can है be कि further श्रद्धा हमारी subdivided. Your भगवान Shraddha में is in the personal form or impersonal or सच्चे in भगवान Dvaita में, or तो Advaita उसके अनेक or विभाग which किए form जा of सकते हैं। Bhagavan. So again, so it can be लेकिन subdivided in many मनुष्य जो categories. है वो But श्रद्धा से ही human चलता है। being functions on Shraddha इसलिए only. भगवान गीता में कहते That's why हैं कि in Gita श्रद्धा Bhagavan रूपा says, सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयम अयो पुरुष, श्रद्धामयो अयम पुरुष, यो यत् श्रद्धा स एव स। कि हमारी श्रद्धा जो है वो हमारे सत्व यानी कि हमारे हृदय के अनुसार होती है। so our तो Shraddha हमारे हृदय is होता है, according to our heart, यानी कि जिस according to the प्रकार के state हम of our विश्वास करते heart, हैं, जो meaning संस्कार हमारे according to the पूर्वजन्म के हैं samskaras that we have. या कुछ पूर्व जन्म की Some वासनाएं हैं, samskaras are तो we get उसी some के अनुसार samskaras हमारी from श्रद्धा होती है। parents or previous life. तो Accordingly, मनुष्य जो है वो we have श्रद्धामय ही है, Shraddha. श्रद्धा से ही And जैसे भगवान human being is made of Shraddha, like made of इसलिए Shraddha भगवान यहाँ only. तक कहते हैं यो यत् Bhagavan even श्रद्धा स says, एव स, कि जिसमें श्रद्धा है वो वही है। whatever Shraddha one has, और उसी के that अनुसार फिर वो that व्यवहार person is करता है, that like that only. उसी के अनुसार वो कार्य करता है। And he functions और like फिर that ऐसा नहीं है only. कि श्रद्धा हमारी एक जैसी रहती है And it is हमेशा, not that श्रद्धा our हमारी Shraddha is always बदलती रहती same है। only. Our Shraddha keeps on changing, हम जैसे हमारा वातावरण बदलता है, जैसा संग just करते like हैं, our environment उसी प्रकार हमारी श्रद्धा भी changes. बदलती रहती है।
our association changes. Accordingly, our Shraddha also changes. कि सताम So, प्रसंगे like Bhagavan Kapila भक्तिरस says, विदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषनादासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति रतिरनुक्रमिष्यति श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो कहते हैं कि जब आप सत्पुरुषों का सत्संग करते हैं, साधुओं का so सत्संग he करते हैं, says that as तो you do satsanga of the सत्संग sadhus, से आप उनकी कथा सुनते हैं and और with जब that कथा का satsanga, सेवन करते हैं तो उसका सेवन करने से आपके हृदय में you hear शुद्धि katha, होती है, and as you hear katha, you विचार get बदलते हैं purified, और your सबसे thoughts पहली change. वस्तु प्रकट होती है आपके हृदय में, वो श्रद्धा है। यानी कि उनकी बातों में आप कुछ Then the विश्वास first thing करते that हैं appears in your कि heart is ये जो है Shraddha, ये ठीक है, meaning you have faith इसके अनुसार in फिर the आप अपना statements. आचरण बदलते हैं। And then with that Shraddha, तो you श्रद्धा change का your यही तरीका है। behavior, your भक्ति की character. श्रद्धा भी इसी तरह आती है। So material Shraddha is also like this only. कोई शाकाहारी है लेकिन वो अगर मांसाहारी If लोगों के साथ somebody मिलना is उठता बैठता है तो vegetarian, धीरे but धीरे उनकी he बात सुन के associates with others who are उनके non-vegetarian, जैसा बन जाएगा वो भी। then by associating with them, he will also become like them. लेकिन Or ऐसे लोगों के साथ suppose जो somebody कभी is मद्यपान करता है non-alcoholic, तो but उसकी if he श्रद्धा भी हो associates with जाएगी। people who are addicted to alcohol, so तो he ये will संग also से ही become like होता them. है। So it happens by sangha, by association. इसलिए जैसे अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक व्यक्ति का आचरण जो है वो So उसकी man is संगत known से by the पता company लगता he है, उसका keeps. आचरण या उसका गुण, उसका चरित्र। तो ये संग से इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। So association तो affects a हमारा lot जो मन because है our mind, वो संग से प्रभावित होता है। it gets affected by association. आधुनिक मनोविज्ञान ने भी ये पता लगाया कि हमारे जो ब्रेन है उसमें कुछ Modern इस psychology प्रकार की कोशिकाएं has हैं also found out जो दूसरे that को देख के there उसी are प्रकार का cells in our आचरण करने brain लगती हैं, which जिनको मंकी imitate others' न्यूरॉन्स बोलते behavior. हैं। They are known as monkey neurons. तो ये हमारा भी अनुभव है। So we also have this इस experience प्रकार का जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। that as we associate, accordingly तो we इसलिए become. श्रद्धा उससे आती है। और So this श्रद्धा is ही from where we मूल get है। Shraddha. कौन किस And बात पर Shraddha is the चलेगा main thing. ये Who उसकी will श्रद्धा walk पर on which निर्भर path? करती है। It depends on that person's तो इसलिए Shraddha. श्री रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं कि So Sri Rupa भक्ति मार्ग में Goswami जो also पहला says कदम है वो that on the सीढ़ी path of bhakti, श्रद्धा आती the है, first मार्ग की ladder सीढ़ी is संगति भजन Shraddha. क्रिया। तो श्रद्धा प्रत्येक मार्ग में चाहिए, जो जिस भी So मार्ग पर Shraddha is चलेगा required on every श्रद्धा है path. तभी वो चलता है। लेकिन भक्ति मार्ग में श्रद्धा का विशेष महत्व है So in bhakti path, और उसका कारण Shraddha ये है is कि भक्ति जो है especially वो अलौकिक वस्तु है। important कर्म तो because फिर bhakti भी is कुछ चीजें हमारे transcendental. सामने दिखाई देती हैं, Other objects still we can see in front of us. लेकिन यहाँ तो पूरा ये भगवान का विग्रह है, ये भगवान ही है, तो देखने में तो सामने पत्थर की मूर्ति So आपके सामने है, here लेकिन ये है कि पत्थर नहीं we है, see the vigrah of Bhagwan in श्रद्धा front ही of करनी us. पड़ेगी So उस पर। now we may feel प्रत्यक्ष में that देख this is करके just a हमारा piece अनुभव of हो जाता stone, है। but then we hear that this इसलिए is श्रद्धा Bhagwan जो है himself, वो not just stone. महत्वपूर्ण है। So then it needs और Shraddha. जितनी Shraddha is श्रद्धा required. के भी अलग अलग स्तर हैं, Shraddha also has different तो levels. जितनी गाढ़ हमारी श्रद्धा होगी उतना So the हमारा मन जो deeper है वो संग से our युक्त होगा Shraddha, और the उतनी ही more तत्परता से our हम mind will be free कार्य of करेंगे। doubts. And इसलिए then कहा we will श्रद्धावान act with भक्तोपि enthusiasm. तत्पर है संयतेंद्रिय। श्रद्धा के यहाँ पर दो प्रभाव उन्होंने बताए हैं श्लोक में, So एक he परापर in है this एक verse he has निष्क्रिय है। spoken about two कि effects, two जैसे results श्रद्धा of होगी तो Shraddha. व्यक्ति One is जो that भी उसका if there is मार्ग चलना है Shraddha, वो तत्पर होगा whatever करने के path लिए, he is following, बड़ा he will become enthusiastic in मनोयोग that. से अपने मार्ग पर वो चलेगा, अपनी साधना करेगा He will तत्परता do के साथ, sadhana माने enthusiastically. उसमें लगा रहना, He will उसमें immerse himself in that वो उसको अच्छा sadhana. लगेगा, He will like that. उसको कोई वो बोझ या भार दिखाई नहीं देगा। He will not feel it as और some दूसरा ये है burden. कि उसकी इंद्रियां संयत हो जाएंगी, And another is his श्रद्धा के senses कारण। will और become जब हमारी controlled श्रद्धा due होगी to तो this शास्त्र Shraddha. शास्त्र कहता है कि मद्यपान मत करो, या कहता है लहसुन Shastra प्याज मत says that खाओ, don't drink liquor,
don't एकादशी का व्रत uh, करो, तो फिर हम don't अपनी eat इंद्रियों को उस तरह onion, से garlic, do Ekadashi Vrat. करेंगे। So then accordingly we control our senses. तो उन चीज़ों को हम जो शास्त्र में जिनके लिए मना किया है, तो शास्त्र So में whatever has been forbidden निषेध किया है, in Shastra, तो उनको हम नहीं करेंगे। then we will not engage in those activities. तो इसलिए ये दो प्रभाव उसके होते हैं श्रद्धा के, क्योंकि श्रद्धा का वास्तव में अगर अर्थ देखा है तो वो यही है, श्रत और धा। So if you see the word Shraddha, it is made श्रत का with मतलब Shat होता है and सत्य, Dha. और धा का मतलब होता है धारण करना या स्थित होना। तो श्रद्धा का मतलब होता है सत्य में स्थित हो जाना। Shraddha means to be जब हमारी situated in आध्यात्मिक साधना Satya, में in श्रद्धा truth. होगी तो हम So when we भूल have जाएंगे वो Shraddha सत्य in वही the मार्ग बताता है, सत्यम Shastra, परम धीमहि। Shastra gives the path, tells the path तो of truth उसी में only. हमारी श्रद्धा रहती है, So then our Shraddha is तो in फिर that हम only. असत्य की तरफ Then नहीं भागते we हैं, do not असत्य run वस्तुओं में towards Asatya or हमारा what is मन नहीं false. चलता है। और फिर जिस प्रकार की श्रद्धा होती है उसी प्रकार का हमको फल मिलता है। And then according to our यादृशी Shraddha, we भावना get the संसिद्धिर result. भवति तादृशी। तो जितनी गाढ़ श्रद्धा होगी उसी प्रकार का हमको फल भी मिलेगा। So the deeper is our जैसे Shraddha, एकलव्य की कहानी the सभी को पता better है we will get the कि result. एकलव्य So like द्रोणाचार्य जी Eklavya के story, पास में गए so he शिक्षा went सीखने to के Dronacharya. लिए, तो द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया कि क्योंकि वो कौरवों को Dronacharya refused ये विद्या सिखाते थे और वो because he राजकुमार थे, used to teach और the ये जो भील का पुत्र है Kauravas, and उनके साथ this में was the बात son नहीं of a करना Bhil. चाहते थे। So he did not want to teach उसको this भी person. परेशानी होती, उनको भी परेशानी होती, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। It would have been a trouble for both. लेकिन So एकलव्य ने Dronacharya refused to teach Ekalavya, द्रोणाचार्य को ही गुरु but मान लिया। Ekalavya had accepted उन्होंने अपनी Dronacharya as मूर्ति guru बना in ली, his उनके heart. सामने वो अभ्यास करने So लगे। he इतनी made a murti गहरी of श्रद्धा थी, Dronacharya. In front of that, तो he अभ्यास was करते करते वो practicing. धनुर्धर He बन had गए। very deep faith, and then he became a और इतने great धनुर्धर archer. बन गए कि And अर्जुन he को भी became such a आश्चर्य हुआ। great वो देखते archer थे एक that दिन वो कुत्ता even Arjun was अभ्यास कर surprised. रहे थे तो कुत्ता भौंक Because रहा one था, day, तो उन्होंने कुत्ते के मुंह में तीर इस when प्रकार Eklavya से was मारे, practicing, he found a dog barking. मुंह बंद So नहीं कर he सकता, shot उन्होंने the arrows मारे, in such a way in the तो dog's mouth that it was कष्ट नहीं हुआ stuck उसे, with लेकिन the तीर जाके arrows in such a way that छेद कर रहा है just उसको। he was not able to bark, but the arrows were not piercing his मुंह mouth or फूला giving हुआ him या pain. मुंह Not like वहाँ that. पर घाव बना रहा है, ऐसा नहीं किया। He did not तो do that. He did इतने not cause any pain to the dog. नियंत्रण से बाण उन्होंने So छोड़ा he shot the arrow कि in such बाण a वहीं पर आकर controlled रुक गया बस, manner that the अपनी arrow दूसरा went चलाया, and just तीसरा चढ़ाया, stuck in a place so that the तो dog वो could not कुत्ता जो bark, है वो but he was not गया कौरवों की तरफ, और feeling any अर्जुन जब pain देखा also. तो वो बहुत And when he आश्चर्य हुआ went उनको towards the कि इसने Pandavas किया and क्या। Arjun saw, वो तो धनुर्धर है तो वो so जानता he है was surprised that इसमें who did this ऐसा नहीं because चलता, Arjun was such a इसमें great कला archer. चाहिए। So he was wondering that it needs तो वो such कुत्ते tremendous को skill to shoot सच arrows बात like this. So he was बताई wondering और who did उसने this. So when he was going धनुर्धर behind the अभ्यास dog किया तो and he एकलव्य saw अभ्यास करने Eklavya, लगा, फिर and उन्होंने that उसको time अच्छा Eklavya लगा was कि practicing, गुरु so मेरा he सम्मान asked कर रहा है, Eklavya, who is your guru? तो उनको बड़ा Eklavya आश्चर्य हुआ responded कि that द्रोणाचार्य जी Dronacharya हैं, is my उनका guru. द्रोणाचार्य तो So क्या he was wondering that मेरे से श्रेष्ठ how गुरु can और मेरे से Dronacharya be श्रेष्ठ his गुरु guru, मेरे से because श्रेष्ठ है। he had heard from Dronacharya तो तभी वो that द्रोणाचार्य को जाके बताया कि Arjun was देखो his ऐसा ऐसा best आपका कोई disciple, शिष्य है, but आप Arjun found चुपचाप somebody उनको greater than him सिखाइए। बोले also. नहीं यार, हमें नहीं सिखाते। So Arjun told Dronacharya that what तो is this? द्रोणाचार्य ने कहा You are नहीं secretly नहीं teaching him, नहीं है ऐसा। but we don't know. So Dronacharya और said क्या that किया, तो I यहाँ don't have any such दिखाया disciple. यही है कि So we know that किस story. प्रकार से So here what is श्रद्धा being के shown द्वारा is उन्होंने सिद्धि that प्राप्त की। by Shraddha, how Eklavya तो इस achieved प्रकार की perfection. श्रद्धा जब होती है So when you have तो this फिर type of शास्त्र का Shraddha, अर्थ प्रकट होता है then you और उसका अनुभव होता है। then you तो realize कहानियाँ Shastra, केवल then you understand the meaning of कहानियाँ नहीं Shastra. है, So these वास्तविकता है। stories are not just stories, they are reality. और इन चीज़ों को हम केवल And भौतिक दृष्टि से या अपने भौतिक तर्क से नहीं समझ सकते। we can't understand क्योंकि this श्रद्धा just by में our ऐसी material अचिंत्य logic. शक्ति है Shraddha has such a
inconceivable power that it can give this तो ऐसी अनेक experience. कथाएं हैं. So there are many महात्मा भी stories बताते हैं like कि मैं this. तो Bhagwan's शरीर है, Vigraha, जड़ if है, you पदार्थ see, it है, will just appear like लेकिन an वास्तव inert में stone. भगवान ही है. But actually, that is not लेकिन stone, that यहाँ is Bhagavan जब only. श्रद्धा होगी तो उसके And अनुसार the हम more we have प्रयोग कर सकते Shraddha हैं. in the Vigraha, then accordingly we will तो experience. इसलिए कहा कि श्रद्धा That is why. लभते ज्ञानम. तो ज्ञानम का मतलब यहाँ कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं है, मतलब अनुभव. So here it is not just जैसी referring श्रद्धा to होगी उसी के अनुसार theoretical हमारा फिर अनुभव होगा. words, but experience. और श्रद्धा के अनुरूप According to हमारी Shraddha, तत्परता आएगी. we will become enthusiastic. ऐसा हमने भक्ति संदर्भ में भी पढ़ा था We had कि जब studied in Bhakti Sandarbha कोई also अपराध करता है that when somebody कि वो शीघ्र commits अपराध के offense, परिणाम then बताए. Jiva तो सबसे Goswamiji, पहला परिणाम जो अपराध करने he का होता है वो अश्रद्धा ही है. told about the result of उसमें offense. अश्रद्धा हो So जाती the है. first result is that he loses Shraddha. शैथिल्य हो जाता है. फिर उसके बाद में हम कहते हैं भक्ति शैथिल्य, कि भक्ति की जो क्रियाएं हैं उनमें शिथिलता आती है. वो मनोयोग So से then होती he है. becomes slack और in भक्ति से विपरीत sadhana, in क्रियाएं, activities of bhakti. He doesn't do it भक्ति चायक वस्तु with या full mind. भक्ति के विरोधी चीजें, उनमें उसका श्रद्धा निष्ठा हो जाती है. So he starts getting Shraddha or विपरीत Nishtha से in those विरोध things में which are श्रद्धा होगी. opposed to श्रद्धा bhakti. होगी तो उसमें आप दृढ़ता से काम करेंगे. जब When श्रद्धा you have नहीं होगी Shraddha, you तो act with शैथिल्य होगा. determination, with तो full इसलिए faith. जो शब्द का प्रयोग किया तत्परता Otherwise, you शब्द become में, slack. कि कैसे श्रद्धा के कारण तत्परता That's आती why है Bhagavan used the word और Tatpara इंद्रिय to निग्रह show भी how होता by है. Shraddha you become enthusiastic तो जब श्रद्धा होगी तो फिर वो दुराचार नहीं and करेगा. your senses become regulated. क्यों? क्योंकि उस Then you will उसका not मन commit उसमें चलेगा wrong नहीं श्रद्धा के activities. कारण. उसमें Because कर्म due भी to नहीं करना. Shraddha, you will not मन like करने doing wrong लगेंगे activities. Your Shraddha will जगह forbid जगह you धर्म from, में हाथ will stop you लगाने, from doing ये wrong करने. activities. तो ये दोनों इसका फल यहाँ पर बताया है. So here the लेकिन result इसके is साथ में ही है explained. उसका वास्तविक फल तो ये है कि The उसको main शांति result मिलती है. is उसमें that he विज्ञान will achieve प्राप्त supreme peace. पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति. तो जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसका क्या So होगा when कि he पराम gets शांति, this knowledge, then he gets supreme peace. उसका मन शांत हो जाएगा. और यहाँ His शांति mind का will मतलब become यही है कि peaceful. अब वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे And उसका peaceful means कर्म that he will बंधन not do any संसार से मुक्त activity हो that जाएगा. will पराम शांति implicate का him मतलब in यहाँ पर bondage मोक्ष of है. karma. Here Param Shantim refers क्योंकि to गीता में liberation. पहले द्वितीय अध्याय में भी Because in भगवान ने ये Gita, बात in कही the थी. earlier also Bhagavan had said जब व्यक्ति को शांति मिलती है, that when यथा a कर्माण्य person achieves संन्याम Shanti or वांछति peace, निस्पृह निर्मम निरहंकार से शांति में भी गच्छति. कि जो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, when the person अहंकार becomes अहंकार छोड़ के, Nishkama, सब कामों को छोड़ selfless, के, कामनाओं को छोड़ के निष्क्रिय होकर चलता है, निर्मम by giving up all निरहंकार, desires, पराम शांत. when शांति he से works, शांति, शांति शब्द का then प्रयोग he achieves Param और Shantim. There इस also शांति को Shanti फिर word is निर्वाण used. उन्होंने अगले श्लोक में कहा. And in the next verse, he had said that this अगले Shanti is श्लोक में Nirvana or उन्होंने कहा कि liberation. ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, नैनाम प्राप्य विमुह्यति. एनाम प्राप्य, एनाम माने ये शांति, ये ब्राह्मी So स्थिति Ena इसका. means here this Shanti, which is the Brahmi स्थित्वा Sthiti. श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम गच्छति. तो उसी So को ब्रह्म निर्वाण बोलते हैं, उसी को मोक्ष बोलते हैं. this is तो called वो Brahma व्यक्ति ऐसा Nirvana or व्यक्ति जो है Moksha, फिर जीवन मुक्त हो meaning जाएगा. such a person, he will become Jivan जीवन Mukta. मुक्ति की दशा उसको प्राप्त होगी. He will attain the state of Jivan और Mukti. अचिरेण अधिगच्छति. अचिरेण मतलब Achirena पिछले श्लोक में means, तो कहा in the previous समय verse, प्रयोग he से said अनेक कालीन आत्मनि विन्दति, कि उसमें समय लगेगा. that it will तो take वो तो time. साधन अवस्था थी. So that was the state of जब वो sadhan. अपने कर्मयोग का साधन कर रहा है तो When he is उसमें doing the sadhan समय of Karma लगेगा, Yoga, कालीन. then he will take some time. और उसको ज्ञान प्राप्त. आगे तो उसमें So देर क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि अब जो why it will not take time? अज्ञान विदूरित Why there will be नहीं no हो जाएगा. delay? Because his Agyan, his जैसे ignorance will कोई be अंधेरे removed कमरा है, immediately. So like there is a उसमें dark अगर आप room, प्रकाश ले आते हैं and if you bring light, तो उस
अंधकार को दूर करने में कितना समय लेगा प्रकाश? then how much time will 5 light मिनट में take आएगा? to remove the darkness in the room? Will it take 5 to 10 minutes प्रकाश that धीरे you धीरे bring अंधकार को light बाहर and then फेंकेगा। slowly it will throw the darkness कमरा छोटा है तो away? 5-10 Or मिनट if a में लग room रहा is है तो small, धीरे then कर it रहा है। 5 to 10 minutes, or if it बहुत is बड़ा big, हॉल है तो then half 2-4 an hour, or घंटे लग big जाएंगे hall, then two to अंधकार को four बाहर hours निकालने में। to इतना सारा throw अंधकार away है, the darkness, because समय there is so लगेगा much कि नहीं? darkness. It will take तो ऐसे time ही or हमारे no? अंदर इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त Similarly, हुआ है there तो is so ज्ञान much of बढ़ेगा धीरे धीरे ignorance धीरे खुलेगा। within us. So अभी when we जितना get हुआ है jnana, सुबह knowledge, then it खुला will रहता है, slowly remove नहीं? the ignorance, because तो नहीं, ऐसा नहीं है, so it is not like वो this. हो जाएगा, It उसमें कोई will समय नहीं लगता। be removed तुरंत immediately. It अधिगच्छति, doesn't take time. तुरंत ही उसको अधिगच्छति का मतलब उसको तुरंत प्राप्त कर लेता है, Adhigachati means he will उसको कहीं जाना नहीं attain that पड़ता है, immediately. He doesn't have to go तुरंत anywhere. उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। He attains that. तो ये ज्ञान की महिमा यहाँ So भगवान this बताते is हैं, the glory of jnana that Bhagavan क्योंकि इस speaks of मूल here. समस्या जो है वो Because the सकामता के कारण रहती main है। problem is अज्ञान से due क्या होगा? to राग द्वेष होगा। राग sakamata. का मतलब इच्छा है, मेरे को ये चाहिए, मैं, तो वो इस बात को समझ जाता है कि इनसे कुछ होने So he वाला नहीं। understands this, तो जब तक that आदमी अज्ञान nothing will happen by में this. रहता है तब तक वो एक भिखारी की तरह है। So as long as a भले person ही is उसके in पास में बहुत ignorance, बड़ी he is like a संपत्ति है, beggar. He लेकिन has उसको a lot of property, महत्व but नहीं दे रहा है he is not giving और भिक्षा importance to मांगता that, हुआ घूम रहा है। and he is begging around. तो एक भिखारी था, So there was a beggar. तो बहुत दुखी था क्योंकि उसको So कोई he was मिलने वाला नहीं थी, गरीब था। in तो sorrow, एक दिन वो किसी एक suffering. साधु मिल गया तो Nobody उसने कहा was ऐसे giving him दुखी क्यों alms. दुखी हो इस हालत So में? he met a मेरे sadhu, पास and the खाने को sadhu कुछ asked, नहीं "Why है, are you ये नहीं है। in so much भिखारियों को distress?" आपने देखा ही है कैसे वो He said that I गरीब don't have खाने को anything to मिलते eat. हैं, And you must have seen beggar. उनके कपड़े गंदे हैं, फटे हुए हैं। They speak in such a way उसने to कहा evoke कि so आपके much पास तो बहुत compassion. संपत्ति है, So the मैं कहाँ said, "You have a lot of क्या wealth. मजाक करते हैं? Why are you उसने कहा making भाई fun of आपके me?" पास है संपत्ति। So Sadhu said, "No, you have lot of wealth. I पहले know उसने that." सोचा कि ऐसे ही मजाक So कर रहा होगा ये, first the beggar thought that इसका maybe he संपत्ति is है, मैं गरीब joking, आदमी। but तो उसने कहा चलो मैं because I आपको am अपनी such a poor संपत्ति person, दिखाता so हूँ। the sadhu said, "Okay, come तो with me. I उसने will show बंदूक you जो है वो where is your बड़े wealth." सेठ So के he पास ले caught गया। hold of the beggar and he took him to a big सेठ को बुलाता merchant, था, कोई wealthy merchant. सेठ भी साधु He बन was जाता था acquainted भिखारी with के that रूप में, merchant initially, बहुत from earlier प्यार only. से बात And करता the था। merchant knew तो that the समझ sadhu गया कि speaks इसके very पास पैसे हैं तो intelligently. कुछ So he understood चाल that if the चलेगा। sadhu has brought तो this poor person, साधु का he उसने will play सत्कार some किया, tricks. सेठ ने बैठाया So he उसको, ये welcomed the बताइए ये sadhu, क्या है? made him तो sit, उसने कहा कि ये आदमी and जो है ना the ये बहुत sadhu पैसा said that चाहता है। this person, तो उस आदमी ने सोचा कि भिखारी ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं बेचने के लिए, ये oh, he आदमी wants to बहुत sell महंगा something. The महंगा beggar सामान thought दे that रहा I है। am a beggar, I don't have anything to उसने कहा sell. ठीक है कि This आप person कितना ले लो is मैं fooling खरीदूँ। around with me. कहता है So the चलो आप merchant said, बताइए "Okay, कितना sell, बेचना I चाहते will हैं। buy." So the तो साधु ने beggar कहा said that 5 लाख the दे दो। sadhu said, "Okay, you have तो उसने just कहा two हाँ eyes, ले he लो can पाँच sell." लाख ले लो। तो भिखारी को उस बोला कि भैया देख अब तू अपनी 2 आंख दे दे, तेरे को 5 लाख मिल जाएंगे, तू तो So he गरीब है। told the beggar, "Okay, you give the two eyes, you are a beggar, तो I will give भिखारी you five भाग गया lakhs." वहां से, So the beggar ran away from बोला there. मेरे को अपनी He आंख said दे that, दे। "No, I don't want to give my eyes." तो कहानी का मतलब यह है कि उसने So कहा the कि हम point लोगों का of जो the शरीर मिला story है is मनुष्य शरीर, that this body that we ये have बहुत received, महत्वपूर्ण है it is very important, और इससे हम and सर्वोच्च वस्तु जो भगवान है उनको हम प्राप्त कर and सकते हैं। we can attain the topmost लेकिन thing, अगर that is हम Bhagavan. भिखारी की तरह But if, like a रोज रोज beggar, भिक्षा मांगते we हुए keep घूमते running रहें around here and तो जो there हमारी कामनाएं हैं, जो भौतिक begging, कामनाएं, because वास्तविक these सुख को material प्राप्त करने के लिए, desires, they make us beggar. और जितनी ज्यादा हमारी भौतिक कामनाएं होंगी उतने बड़े The भिखारी more we होंगे, have material desires, क्योंकि the हम भीख ही bigger मांगते the रहते हैं beggar कि we भैया मेरे are. को ये चाहिए, Because अभी we are दे just दो। begging around, I want this, I want that, हमारी जो अपनी संपत्ति है, and our real मनुष्य wealth, शरीर, this जिसके लिए material, देवता भी this तरसते हैं, human अनादि body, श्याम की मकारिषु even devatas crave प्रसन्न for ये this body. साक्षी स्वयं एव हरि, के इन्होंने क्या कार्य किया है कि भगवान इनसे प्रसन्न They हो गए wonder what मनुष्य these शरीर human मिला beings करके। have done, that they have got this लेकिन human देवता भी body, इसको नहीं प्राप्त कर because सकते, even devatas, they इसको cannot अधूरा achieve समझते हैं। this.
what to speak of the तो वो इसी asuras. प्रकार है कि हम इस अपनी So it सृष्टि is का like अनादर करके विघ्न we करते हुए have चलते this हैं, property and we are उसके not पास सब कुछ valuing है it. लेकिन We अपने don't को recognize its value. We run around उसको here and नहीं there समझता begging. है। तो ये ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है हमको, So when we get this knowledge, अमीर बन जाते हैं, हमारे अंदर we दरिद्रता नहीं रहती, we become wealthy. फिर वो We do दारिद्रता का not, we भाव are नहीं no आता, more चाहे हमारे पास कुछ beggar भी ना है, anymore. फिर We हम don't feel स्वभाव से like that. Whether we have something or शहंशाह no, इंसान हैं। whether we have or no, but we don't never feel like a beggar. हिंदी में कहावत है ना कि We are भगवान की the इच्छा king हुई of kings. तृष्णा गई, मेरे को पूरा याद नहीं है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि So जब it is said in इच्छाएं Hindi, समाप्त हो which जाती हैं तो means व्यक्ति that when महाराजा हो जाता desires है। are साधुओं को finished, महाराजा कहते हैं the ना, महाराज। person is साधु के becomes पास a कुछ king. भी ना हो तो Like लोग sadhus are कहते हैं addressed as महाराजा है Maharaj. महाराज। If the sadhu may not have anything, तो but but people महाराज address नहीं them है, as Maharaj. So what type of Maharaj or king are नहीं they? है, और They have दूसरे given up the material desires, महाराज जी है। and that's why they are addressed as तो उसी Maharaj. का महत्व यहाँ पर भगवान बता रहे हैं So कि इस Bhagavan is ज्ञान का जो explaining फल the है, importance of that भगवान only की here. मिलेगा वो It व्यक्ति, is so important that when उसको the परम person gets शांति this मिलती है, knowledge, क्योंकि शांति he तो will है ही पहले से get ही, मोक्ष कहीं से supreme लाना नहीं है। peace because peace is already there. You don't have to ये bring जो liberation बंधन from जो है वो anywhere. माना हुआ This है, bondage is वास्तविकता also हम something we have इसको just नहीं assumed जानते or हैं। accepted. Actually, there is no इसको भगवान यहाँ bondage. पर समझा रहे हैं। So that is what Bhagavan तो is प्रभु teaching इसी here. पर We will समाप्त करते stop हैं, here. किसी को कोई If प्रश्न you हो तो have any पूछ सकते हैं। question, you can ask. धीरे लीजिए, कृपया अपना प्रश्न पूछें। Radhe Radhe Babaji, हिंदी में बोलो, thanks for a wonderful class. हिंदी में बोलो, Babaji, हिंदी में बोलो। maybe I will not manage. It's such a technical subject matter. I don't have that kind of vocabulary. So, Babaji, the subject of Shraddha is so technical, it's so subtle, and it's something we're all aspiring for. You said that knowledge is most purifying, but unless it has the catalyst of Shraddha, it really doesn't take hold. And we understood from the talk here that actually if we do aparad, then our Shraddha wanes, it slackens, it weakens. And then, we become weak. So this knowledge doesn't have a hold on us. So just like if we can do something to weaken our Shraddha, is it possible to do something to actually gain Shraddha? Because sometimes in Gita, we see Bhagavan saying that, I give them Shraddha to worship the demigods. I give them the Shraddha to worship the ghosts and spirits. So what can we do, or can we influence a person to get Shraddha in this knowledge? Otherwise, this knowledge is just useless on its own. So is it possible for us to do something to actually strengthen our Shraddha? That's my question. Thank you. तो उनका प्रश्न ये है, मूल बात ये है कि श्रद्धा So कैसे his प्राप्त, question mainly is how do we get Shraddha? तो श्रद्धा प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, So the best वो way, है most important method of getting सतांग Shraddha संग, is Satam साधु Sangha, संग करना। Sadhu Sangha. और साधु संग का मतलब ये नहीं कि उनके And पास Sadhu बैठ के Sangha does बातें not करना, mean just लेकिन sitting with them and उनसे gossiping, शास्त्र श्रवण करना, but it means जो भी hearing हमारा Shastra मार्ग है from them, whatever is our उसके विषय path में जिज्ञासा करना। regarding that भगवान ने कहा subject, तद्विधि प्रणिपाते, questioning the sadhus, hearing from them. और उनकी सेवा करना। Like Bhagavan said, Tadvidhi Pranipatina, and then तो also साधु serving the संग, sadhu. और साधु संग So का Sadhu जो Sangha and अंग है वो है श्रवण, the main और element of साधु Sadhu सेवा। Sangha is Shravan ये दो and चीज जो doing है seva ये to the sadhu. श्रद्धा के बहुत ही These two things, these are महत्वपूर्ण उपाय हैं। very important methods of और जैसा getting मैंने कहा Shraddha. भी था कि And as I भौतिक वस्तुओं said में भी हमारी earlier श्रद्धा जो also, है वो संग से ही that होगी, in material subject also, और इसलिए we get हमारे Shraddha शास्त्र to में Sangha श्रद्धा only, इतना महत्व association दिया only. है। That's why in our लव मात्र Shastras, साधु संग Shraddha is सर्व given so much शास्त्र है, importance. लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और भागवत में भी कहा है कि क्षण मात्र संग जो है In Bhagavatam also it is said उसके लिए that उसके सामने for मुक्ति भी कुछ नहीं। Mukti, liberation is also nothing साधु का compared to नाम, a moment of association with 11वें sadhu. स्कंद में भगवान भी कहते हैं इस बात को कि In 11th ये canto सबसे also बड़ी Bhagavan पूंजी है। says that this is the biggest wealth, the sadhu sangha. So
ते वही छिदन्ति, वही लोग आपका छेदन कर देते हैं संशयों का, और आपके अंदर श्रद्धा का प्रवाह होता है. So they destroy your doubt and then Shraddha is infused in you. श्लोक 11वें स्कंद में आता है. और कोई? परमानंद जी पूछते हैं कि Question. आपने बताया कि You किसी explained that भी Shraddha is important on any मजबूत spiritual है path और and that Shraddha संस्कारों comes from से samskaras, संस्कारों association and following Shastra. का अनुसरण करने से आती है And one can और कोई व्यक्ति lose अपराध Shraddha करके due to अपनी some श्रद्धा खो भी offense. सकता है. Are there तो any क्या other ways श्रद्धा को विकसित करने के लिए कोई than और these उपाय that है one gains और Shraddha, हमें and केवल what are the इन offenses अपराधों से that बचना we चाहिए? should avoid? तो उपाय तो मैंने अभी बताए. So I already सत्संग, just now I said that what is how शास्त्र to get श्रवण Shraddha by sadhu और sangha, सेवा, hearing Shastra and doing ये seva. महत्वपूर्ण उपाय हैं इसको These प्राप्त are करने the के लिए. important methods और to जो get this. अपराध, मुख्य अपराध है शास्त्र की The निंदा करना, main संत की offense निंदा is करना, offending वैष्णव की Shastra, निंदा करना, criticizing उनकी अवज्ञा Shastra, करना. Vaishnavas, ये सबसे भयंकर अपराध है. इनसे अवश्य बचिए. disrespecting Guru. These are the most dangerous लोग इनको offenses. करते रहते You हैं. should definitely बहुत avoid this. सामान्य है, And बहुत कॉमन people अपराध do है, it very commonly, regularly. बहुत भयंकर अपराध है. And this is very dangerous. अपने अहंकार के कारण हम करते हैं ऐसा. Due to our ego, दूसरों को we do मान्यता ही this. नहीं Due देते. to our pride, we do हम में this. से We बड़ा don't कोई तो respect होता ही others. नहीं है. We don't कोई हमसे think that कीमती somebody can be better or greater than us. बड़ा व्यक्ति हो, No matter how बड़ा much है, somebody ज्ञान is में बड़ा bigger है, than us, whether in साधना करता age है, or हम sadhana उसकी or वैल्यू नहीं knowledge, करते. तो ये अपराध का we कारण बनता है. don't give any importance to that person. So this is the reason for नवदीप जी का aparad. प्रश्न है कि 4.38 श्लोक में जो योग शब्द है वो कर्म योग में भक्ति के लिए प्रयोग होता है Question. या केवल कर्म योग के लिए? In यहाँ the yoga here कर्म refers योग to है, karma yoga or ये विष्णु only भक्ति karma नहीं है. yoga. So answer here it refers to karma yoga because that is the subject, but you can प्रक्रिया तो उसी प्रकार है refer, जैसे मैंने कहा कि it can मंत्र also श्रद्धा indicate से bhakti याद also, करना है, because as I said, और in श्रद्धा bhakti होगी तो bhakti also तदनुभव begins with विशेष प्राप्त shraddha, होगा. श्रद्धा because होगी if तो there is उसका अनुभव shraddha then there will be मिलेगा. he'll be enthusiastic, will get श्रद्धा से experience. आरंभ होता है, तो प्रक्रिया एक जैसी है, Begins with shraddha लेकिन only. यहाँ श्लोक में The विशुद्ध process श्रद्धा is बताई. same, but नवदीप जी का दूसरा प्रश्न है कि क्या हम अपने प्रियजनों के साथ आत्मा के स्तर पर जोड़ सकते हैं ताकि हमारा जो संबंध है वो शाश्वत हो question, और can we connect with our dear ones at a level of soul so that आत्मा our के स्तर relation पर is आप कैसे eternal and not जुड़ेंगे, temporary? क्या प्रक्रिया Question, है? how do you connect आपकी at the जो level of आत्मा होती atma? नहीं है, What is the method? Have you आत्मा seen जीवन their नहीं atma? देती है. You have not seen yours also. हमारा सारा व्यवहार जो है वो शरीर से ही All है. our जिनको behavior आप is अपना at the संबंधी level of कह रहे हैं वो body संबंध only. भी तो शरीर से ही Those है. who are referring, whom you are considering as your शरीर को छोड़ के relatives, आत्मा से the संबंध नहीं relation बनता. is with the body only. What is the relation आत्मा से between संबंध the two बन जाएगा तो atmas? टूटेगा नहीं कभी. If the relation is जब जुड़े established हुए हैं between the आप सारा atmas, then संबंध it तो will never शरीर से ही break. करेंगे. But how will you make that? Because the relation is with the आत्मा body आत्मा only, संबंध सीधा हो नहीं सकता है. and atma and atma cannot have direct connection. Our अगर connection भगवत can be चिंतन with संबंध Bhagavan, and we via Bhagavan we can have relation with आप others काम also. करते हैं When you are working in a आपके साथ में company कोई आपका and you सहयोगी have a है, colleague, वर्कर है, तो उसके साथ में आपका so संबंध you do not वास्तव में have कोई direct सीधा संबंध नहीं relation है. with that person. संबंध इसलिए है कि आप उस Your कंपनी में, relation is आप because उस you are कंपनी में working in काम the करते हैं, वो भी company. उस कंपनी में You काम are करता working है, in the इसलिए company, he is संबंध also है. working in the सीधा company, so you are संबंध नहीं related. है. Directly you have सीधा no जिसको हम relation. कहें कि नहीं जी हमारी तो आपस में मित्रता, वो मित्रता उसी के You कारण may है. say that we are friends, but that is also because अगर both of कोई you are छोड़ के working in चला the जाता same है तो हम भी company. मित्रता If रखते he हैं, तो leaves मित्रता उसी and के कारण है. still he remains your friend, still the friendship was established due to that only. यूट्यूब से एक प्रश्न है कि हम साधु सेवा कैसे कर सकते हैं जब हम भौतिक रूप से किसी साधु के पास नहीं रह रहे हैं? अब ये तो मुश्किल When we बात are है. living with the sadhu, then how to do sadhu पहले तो seva? आप देखो Answer, कौन साधु है. that is difficult for me to say. अगर First of साधु की all, you आवश्यकता है तो आप check who is sadhu, केवल and then you check if he has some धन से needs. सेवा कर सकते हैं. You can maybe help with money. कुछ You can आवश्यकता do है seva तो with सेवा money. कर सकते He हैं. may have some needs. You can मानसिक रूप से fulfill कभी those कर सकते needs. हैं, You नहीं may कर not be सकते. able to do with body, but you can do this much. नवदीप जी का एक और प्रश्न है
Question: Did Dronacharya act unjustly toward Eklavya by asking for his thumb as Guru Dakshina, even though he didn't consider Eklavya as his disciple? If not, what reasons could justify his request? क्या अनुरोध को अनुचित ठहराने? एकलव्य जी से द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांगा था, तो अगर ये गलत नहीं है तो ऐसा क्या कारण है कि ये गलत नहीं है? तो सीधा प्रश्न पूछो ना कि उन्होंने जो अंगूठा मांगा है ये ठीक है कि गलत है? गलत क्यों? तो गलत और So सीधा you should ask question directly whether it was right or wrong. जो शिष्य और गुरु है उनके ऊपर निर्भर करता So it is right or wrong, it depends on the guru and disciple. It doesn't depend on you. We start making conclusions according to our own understanding or vision. But the guru disciple relation is between them. So who are you to decide that it is right or wrong? शिष्य जो है वो प्रसन्नता से अपना अंगूठा दे रहा है गुरु The disciple is happily giving his thumb to Dronacharya. So who are you to decide or conclude that it is wrong? So Guru is asking. तो यही तो बात आती ना, हमारे गुरु में श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए हमारी We don't have Shraddha in the Guru, that's why we don't understand only. We do not have any Shraddha in the Guru actually. इसलिए तो कहानी दिखाई है कि कितनी This is why this story is shown here, that how much Shraddha he has. अंगूठा तो हमको कैसे पता चला? If the Guru would not have asked for the thumb, then how would we have understood that Eklavya had so much Shraddha in his Guru? If there would have been no Ravan, how would you have understood the glory of Ram? He would have become king. If there would have been no Kaikai or Manthara, Bhagwan Ram would have become king and he would have just ruled. Then there would have been nothing to teach. So Ravan, it was Ravan who showed his glory. So Eklavya had such deep Shraddha. This is what Dronacharya showed, that is something you cannot understand because we do not have Shraddha. So we think that, oh, it was such an unjust, wrong thing that was done. The story of Eklavya that you are hearing today and what logic you are making, that is what Dronacharya showed, that he is such a great devotee of mine. I am not accepting him as my disciple, still he is giving his thumb to me. For that only Bhagavan is speaking here. So first of all, understand what is Shraddha. I am not blaming anybody, but where is our Shraddha? Do we have Shraddha? This is Shraddha. और ये श्रद्धा दिखाने के लिए ये कहानी महाभारत में दिखाई गई है। नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा श्रद्धा होती क्या है? और हमको तो Otherwise, how shall we understand what is Shraddha? Even now we don't understand what is Shraddha. We are still not trying to understand what is Shraddha. We expect that it should be explained logically to us, what Eklavya did, how it was right. And then it will be said later that Eklavya fought on the side of Kauravas, and Dronacharya knew, and he was such a great warrior. Dronacharya knew that he would be fighting from the side of Kauravas in future. Dronacharya knew that, so he asked for the thumb. So he knew that he would be supporting, Eklavya would be supporting Kauravas. So all that explanation is also given, but I am explaining another angle, that here it is being taught that you should understand what is Shraddha. His thumb was cut off. He cut off his thumb, but he did not lose any Shraddha. If his Shraddha would have been affected, he would have expressed sorrow. He never said that my Guru has exploited me. He happily gave that, and he felt very fortunate that he could please his Guru. He has asked something from me. So is it something small? And Guru is like Bhagavan, Guru is Bhagavan only. He is considering Dronacharya as Bhagavan only. So what is the value of a thumb? People lose thumb due to so many reasons. Body is temporary. He attained so much glory and fame by doing this activity.
आध्यात्मिक लाभ हुआ। And not just about fame, he gained spiritual benefit by doing this. कर लिया तो और रह क्या गया फिर? When you have pleased the Guru, then what is remaining? What else remains to be done? When Guru is pleased, Bhagavan is pleased. This is Shraddha. ये तो कहा कि यादृशी This भावना is told here. भवति तादृशी। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो किसी दूसरे धर्म में है ही नहीं। ये गुरु शिष्य का संबंध और कहीं नहीं है ये। So this is the glory of Indian culture. The relation of Guru and disciple. It is not found in any other culture. This is transcendental. गुरु जी जय श्री कृष्ण। हाँ गुरु जी, जो ज्ञान प्राप्त होता है, Question. ज्ञान चला जाता है, When we get knowledge and we lose ignorance, the ignorance is lost. So when we get that gyan, is it permanent or again we may lose it? So answer, no, it is permanent. Once you get the light, it is permanent. There is no question of falling in ignorance again. So question, how will I understand that I have got gyan? The answer, when you will get it, then there will be no need for you to ask. Like if you are hungry and you are eating food, so how will you understand that your stomach is full? Will you ask somebody else that your hunger is satisfied? You will experience yourself. So when you will get knowledge, there will be, you will not ask whether I have received gyan or no. When you put your thumb in the fire and it has burnt, will you ask somebody that please tell my thumb has been burnt or no? How will I understand that my thumb is burnt? Will you ask like this? No. ये तो स्वयं इसलिए कहा ना आत्मनि विन्दति। जो श्लोक में भगवान ने कहा ना, तत्स्वयं योग संसिद्ध है कालेन आत्मनि विन्दति, आपकी आत्मा में ही होगा वो, तो उससे गहरी चीज तो और कुछ है नहीं। So Bhagavan said himself that it will be in your Atma only. Nobody else has to tell. हो गया, चलो प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं
नमामि हरिं परम। हरि ओम तत्सत।